But if I internalize it, if I kill my own art out of fear of them, then I've really lost. Correct, I cannot submit the film for Academy Award because to qualify for an Academy Award, you need a week-long commercial run, and I cannot show the film commercially. I'm definitely not alone, and right now I'm all about connecting with people who get it, because so many people don't understand what's happening. So many people don't understand this is a free speech issue. And this is just one obstacle among many of expressing yourself freely. I mean, I think the first thing people internalize is just, criticism. This makes it much, much worse. This is like, it's bad enough that someone might think your art's not good, but hey, you can go to jail for it. You've been gone a month and you never emailed me your phone number. I didn't? Well, I have some good news. They've extended my contract another year. What? Another year? You said you'd be back in 6 months. But I like it here. What about me? What about Lexi? What about our apartment? What about us? Don't cry, Nina. I love you. You could come here. She sits under a tree and she weeps and thinks of Ram. I love you, Sita. You must be my wife. Never. I love only Rama. I am the chaste and virtuous wife of another man. I belong to Rama as the rays belong to the sun. Give me back to Rama, or you shall soon hear his mighty bow that resounds like Indra's thunderbolt. Your ugly yellow eyes should fall out of your head as you stare at me so lustfully, Ravana. The only reason I do not reduce you to ashes with my own blazing power is because Rama has not ordered me to do so. Another musical. So जब भी म्यूजिकल आता है सीता माता का बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड वर्जन आ जाता है, but whenever she is actually depicting the actual story and the actual emotions, the Indian essence is kept as it is. Smart move to, I don't know, maybe that's how she saw it in her head. Like होता है ना कि एक कैरेक्टर होता है जब वो नॉर्मली मूवीज़ लाइक मूवी अगर होती है, अगर एक कैरेक्टर का ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो कि वो पूरे मूवी में कलर कुर्ते में, but for a song sequence she's been turned to this gown wearing flowing saree lady, right? मुझे वैसा कुछ लग रहा है. So जब ये लोग बात कर रहे हैं it's very surface level. जब actually जो हुआ था उसको वो लोग डिपिक्ट कर रहे हैं, they are showing it in quite the actual historical manner. जैसे अगर स्क्रिप्चर्स का रीटेलिंग करना है तब जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके का यहाँ पे ये हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. और जब ब्लूज़ की या गानों की बात आती है दैट टाइम थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं, विच I don't know what to say about it. If you are people, you find leave them inside. My mom and daddy love this baby again. Said he come back, but he forgot to say when. I knew she would like to be she and split yet, but I'm revolution. Buddy, now what you do? Home.
accurate representation. It is possible. It is possible that she didn't No, trust the monkey. I think she absolutely trusted the monkey. But she wanted her man to But come. she wanted her man. Okay, so that's the thing. It's like, you gotta prove it to me, baby. But not only that, but she also wanted. Fight for me. But she. Sorry, go ahead. No, but she also wanted the evil king to be defeated. I think that was the thing, Right, that my right. husband should come and actually teach us man a Okay, lesson. why don't you go back so that the evil king doesn't have a hostage and then do it? But it was almost like she's trying to glorify Ram through this whole process, like my man will come and he's capable of this and he is virtuous and he will kill Ravan and So this anyway, is a bloodthirsty woman. They didn't get the point of Valor, righteousness, to do justice. ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, especially when it comes to Indian culture, especially when it comes to Indian traditions, especially when it comes to kings, Kshatriyas. So, उनका responsibility होता है that they need to be just towards their subjects. They need to annihilate evil, कहीं भी हो रहा हो वो. So that is something that they need to acknowledge and they need to work towards it. That is exactly one of the core pillars of Kshatriya Dharma. That point I think यहाँ पे miss कर गए हैं. But if you see the other side of the story, क्योंकि बात सीता माता की हो रही है, they are like, yeah, she could have been selfish, but she wasn't. She was Sita Maiya, Sita Mata, selfless. तो शी इज बेसिकली कि रावण का अहंकार टूटना ज़रूरी है एंड ही नीड्स टू बी डिफीटेड बिकॉज इतना बड़ा पाप उसने किया, तो उसको उसकी शिक्षा मिलनी ही चाहिए, उसका अंत होना ही चाहिए. सो प्लीज़ आप पूरी सेना लेकर आइए और फिर रावण का वध कीजिए, लंका के लोगों का कल्याण कीजिए. पॉइंट. Because ahankar, like ego, not the ego which tells you what your identity is, but the ego which is like only I am the truth here, alright, get it, damn it. ये वाला जो ego है उसका नाश होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, because ego का अगर नाश नहीं होगा तो it won't go smoothly, there will be no harmony, peace and harmony नहीं होता. Ego is like everything should be centered around me and harmony is like everyone's individual perspective has been taken on and then we proceed, right? वो जो sluggish attitude है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था so that लंका के लोगों का भी कल्याण हो. That's how Kshatriya saw these things, and as per the Kshatriya dharma, Sita Maiya not going along with Hanuman and asking Lord Rama to please come and defeat Ravan and then take me home. That is how things work in Kshatriya Dharma. If I have to speak on the other hand, मैया वहाँ से निकल कर सुरक्षित तरीके से निकल जाए, that's how we modern people think, right? अगर आज के ज़माने में ऐसी प्रॉब्लम होती है एंड प्रभु श्री राम was नहीं है, नॉर्मल पति पत्नी है, कहीं किडनैप्ड है या कहीं ऐसे हॉस्टेज है या कहीं किसी प्रॉब्लम में है, बेस्ट व्हाट वी विल ट्राई इज विल ट्राई टू एस्केप आउट, राइट? मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, आ जाओ, ठीक है, रात को 2 बजे चुपके से आ जाती हूँ. That's how it happens, right? But ये अलग टाइम है, ये अलग काल है और जो कैरेक्टर्स है वो बहुत अलग है. तो यहाँ पे क्योंकि आज सीता मैया से इसकी मैं चाहूँ तो मेरे खुद की शक्ति से तुम्हारा 1 सेकंड में नाश कर सकती हूँ, लेकिन मैं वैसा करूँगी नहीं क्योंकि प्रभु श्री राम ने मुझे उसकी अनुमति नहीं दी है. अभी हम आई गेस सैन फ्रांसिस्को में वापस आ गए. By the way, Thiruvananthapuram, if I got that correct. Like from what I understand, when I was around, there were monkeys were one species, and then the Vanars were actually another species. They were half man, half monkey. Yeah, but that's what the army was, because otherwise they were these 2 brothers. They didn't have any The army. 2 brothers and then all of Sugriv's
big army, all the Vanar Sena. The Vanar Sena, right. Hanuman, assemble the monkey warriors. We shall cross the sea to Lanka and rescue Sita. Yes, my lord. We march at once. Couldn't these be apes as well? रामसे को बनता हुआ दिखा देते हैं, क्या जाता है? पीछे ट्रेल में से रामसे को बनता हुआ दिखा देते तो चल जाता। Wait a second, अंगद भी नहीं शायद आएंगे इस तरफ से, एंड इस तरफ से अपने मेघराज का भी कोई रोल नहीं है, शायद से शपथ विभीषण का भी कुछ नहीं दिखाया अब तक. नो विभीषण ऑल्सो इन द सिनेरियो. जो कि सीता मैया के अराउंड जो भी कैरेक्टर्स आए गए उनको ही दिखा रहे हैं प्राइमरीली. सो प्रॉबली नो कुंभकर्ण एज वेल, प्रॉबली. लेट्स सी. एक शॉट अगर दिखा देते कि गर्दन की जगह नाभि में डाली है, नाभि में जस्ट द धनुष्य बाण गोज इनटू हिज नाभि, रावण's नाभि, ऐसा हिस्टोरिकली एक्यूरेट हो जाता ना, टेंशन ही नहीं. जब ये जो ब्लूज गा रही वाली सही सीता माता है, पीछे आप दिखा सकते थे कि पूरा वो वृक्ष वाटिका ऐसा आ रहा है एंड रावण इज डेड एंड स्क्रीमिंग एंड थिंग्स. बट ये दान दान ताकते ताकते दाद करते ते तकता गेदी कि नागे 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 ते किते दाद करते ते तकता गेदी कि दान दान ताकते ताकते दाद करते ते तकता गेदी कि नागे 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 ते किते दाद करते ते तकता गेदी कि दान. Dave! Dave! We're in India. No kissing in public. Let me take your bag. Well, here you are. Good night. What? असली कहानी यहाँ से शुरू होनी चाहिए आइडियली. I have terrible suspicions about your character and conduct. Ravana was aware of your beauty. He cannot have kept you in his house for so long without touching you. The very sight of you is painful. You are free to go wherever you want. I have no more use for you, Sita. If I had known this, I would have killed myself before and spared you this war. Build me a funeral pyre. I cannot bear to live. Despite my virtues, my husband has rejected me. I will not touch you. Right. I will not force you in my house. Right. I will not force myself on you. Well, he never had sex with her, did he? No, as Sita proved over and over again. By trial of fire. But I'm afraid you don't care for me. You never show it. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन. तो सीता, जो माया सीता है वो स्वर्ग प्रस्थान कर लेती है और जो एक्चुअल सीता मैया है वो वापस आ जाती है. फॉर दैट दी अग्नि परीक्षा वॉज बीन डन. बट काफ़ी सालों तक अग्नि परीक्षा को सीधा सीधा जैसा है वैसा दिखाया गया था कि प्रभु श्री राम इज़ लाइक प्लीज़ प्रूव योर पायसनेस, प्लीज़ प्रूव योर प्योरिटी. एंड चीज़ लाइक ठीक है अग्नि परीक्षा में बैठ जाती हूँ. बहुत जगह एक ऐसा भी नैरेटिव, ऐसा भी एक्सक्यूज नैरेटिव या बहुत ही टेम डाउन नैरेटिव मे बी ऐसा भी था कि प्रभु श्री राम जस्ट सेड कि नहीं, मेरे लिए नहीं,
समाज के लोगों के लिए तुम अग्नि परीक्षा दो। मुझे पता है तुम पवित्र हो, यू आर प्योर, आई नो यू इन एंड आउट, लेकिन जो लोग हैं, जो समाज है, उनको एक प्रत्युत्तर देने के लिए अग्नि परीक्षा देना आवश्यक है। एंड शी इज लाइक ठीक है, फाइन, वेल इनफ। डोंट टेल मी दिस कि इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया गया है इसके पहले। यू हैव अ वेरी लेजेंडरी सीन, ओके, यू हैव अ वेरी लेजेंडरी मूवी अराउंड इट। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ये लोग, गलती से भी नहीं। एंड दिस मूवी इज लाइक सीता सिंग्स द ब्लूज। अभी तो सिर्फ आधी मूवी हुई है, अभी आधी और मूवी बाकी है। एंड दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द फिल्म। शक करना, वन प्रस्थान करवाना, विरह में रहना, ये सब। And he's still not convinced, it seemed like, after she went through the trial by fire. I mean, it's almost like... No, but I thought he was convinced. He then, it was peer pressure later with the washerman. Yeah, because the washerman, because... He was convinced. It wasn't like he doubted it. He kind of was like, okay, you are pure. And I think he did hug her and then flowers fell from the heavens or something. Whoops. I guess you were pure after all. Will you forgive me, Sita? Of course, Rama. I live only for you. There's the heart coming up. What? Technopark? Thiruvananthapuram में Technopark है वैसा? Hey, they want me to attend this meeting so much, they're gonna fly me all the way to New York. 5 days, all expenses paid. That's great. It'll be fun for you. It was like the world's first airplane or something. It was like the first, like they actually flew back. I don't think it was on a bird. Was it on a bird? I think it was actually a flying thing of some kind. They were in a carpet like Aladdin. No, it was like an elaborate structure. I remember. Pushpaka. That's what he came back on. The flying chariot. Pushpaka Vimanam. That was one of the Air India jumbo jets also. Correct. And there's a Right? movie, a silent movie. That Pushpak, was... yeah. Pushpak movie, silent movie. Pushpak. Brilliant movie. Legendary Kamal Hassan sir. This is symbolic कि जितने भी लोग हैं सब प्रभु श्री राम के पीछे पीछे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि he did a great achievement. But सीता मैया is probably left alone in the cold. तो इसको ऐसे मत लो कि जैसे दिख रहा है on surface value. So the meaning that what I have taken up is this कि ये ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता की इज्जत नहीं की। ये ऐसा भी नहीं है कि हनुमान हैड नो रिस्पेक्ट फॉर सीता मैया, ये वैसा भी नहीं है। दिस इज मोर लाइक कि सीता मैया को जो ओवरऑल कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रही थी, स्पेशली जब अयोध्या के लोग देख रहे हैं सीता मैया को एंड दे आर लाइक ट्रीटिंग हर प्रोबेबली इन अ मोर कोल्डर वे, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। मुझे तो भी देख के यही लगा, पहले सेकंड मुझे भी लगा कि ए वो नहीं है, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि ये कैरेक्टर जो है ये सीता मैया का म्यूजिकल वर्जन है। तो बेसिकली वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है, तो जब वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है उसको सिंबॉलिकली किसी तो तरीके से वो जताएंगे, राइट? तो ये वो सिंबॉलिक जताने का तरीका है। सब लोग प्रभु श्री राम को प्रेज कर रहे हैं एंड आई एम बीइंग साइडलाइंड। देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस बट आई एम जस्ट बीइंग साइडलाइंड एंड आई नो दिस फीलिंग ऑफ गेटिंग साइडलाइंड very well. If you want the rainbow, you'll have to bear the rain. प्रभु श्री राम के साथ रहना है तो समाज की अन्य बातें भी सुननी पड़ेगी. Deep song depicting every woman's pain.
somewhere down the line. ऐसा गीत जो एक स्त्री के मन को सटीक तरीके से व्यक्त करता है कि यदि मुझे मेरे जीवन साथी के संग जिंदगी बितानी है तो मेरे आसपास के समाज को, मेरे आसपास के लोगों को सहना तो पड़ेगा, क्योंकि रेनबो कम्स वंस इन अ सीजन. लाइक रेनबो हमें बहुत रेयरली दिखता है, अक्सर बारिश ही बारिश होती है. इंटरमिशन. What? 3 मिनट का इंटरमिशन है? क्या बात है? Nice. 3 मिनट का इंटरमिशन है. Interesting. स्मार्ट है, इन लोगों ने इंटरमिशन भी एनिमेट करके रखा हुआ है. ऐसा तो मैं भी पैक पूरे कर लेती हूँ. मैंने सोचा बच्चों की पिक्चर है, एनीवन हियर दैट? मुझे लगा था बच्चों की पिक्चर है, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों की पिक्चर नहीं है. डू यू हियर दैट? स्मार्ट मैन. न्यूयॉर्क सिटी. Dumpsville. What? Dear Nina, don't come back. Love, Dave. What? One of the best representations of female agony. I'll just tell from my personal experience. So जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक टाइम ऐसा होता है कि मेरा गुस्सा साइड में रह जाता है और मेरे आंसू बाहर आते हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए आया होता है बिकॉज आई एम हर्ट, राइट. एंड मेरा जो हर्ट है वो ओवरकम कर लेता है मेरे एंगर को, स्पेशली जब मैं एक्सप्रेस कर रही होती हूँ अपने आप को. द एंटायर एनिमेशन, first things first, culture is not disrespected, it's accurately represented. Nothing wrong with cultural representation throughout the song. And besides जो agony है वो एकदम सही तरीके से सामने रखे हुए. हाँ, लिरिक्स अटपटे हैं, बहुत ऐसे क्रिएटिव लिरिक्स नहीं है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है वो सीधी रख दी गई है. सो आई पर्सनली लव्ड दिस द मोस्ट. This is Ayodhya. Yes. Rama, I'm pregnant. That's wonderful, darling. The Dhobi's wife is with somebody else, and when she comes back, he goes, "What do you think? I'm Ram." I'm like Rama. To take somebody back in the house after she's been with another man. Dhobi is, right? He's a washerman. Right? And when the news of that hits Ram, Ram says, I cannot rule if my subjects don't respect me." Right. Say, Sita, would you like to take a trip? But we just got here. Yeah, great. Get packing. Brother Lakshman, my wife's dubious reputation casts doubt upon my own.
You must drive Sita to the forest and abandon her there. I cannot have her in my kingdom. I think basically as a king, he had to sort of do, if the common man was doing that to their wives, then why would the king treat his wife any differently, kind of a thing. Like, I felt he let her go not because he thought she was impure, but because he said that to be a king, he needs the respect of his subjects. Right. And he can't be considered. Well, but I felt like he always had this doubt that she might not be pure.